Right. Negative. In that Never way. be one. There was only one difference between Ram and Raman. Just one. एक अच्छा Both था were एक बुरा था. genius. Both were powerful. Both had immense love for God. Everything was same. What was the difference? बस एक अच्छा था और एक बुरा था. Yes. Difference was of character. चरित्र. एक चरित्र का पक्का था, एक चरित्र का कच्चा था. बस यही फर्क था. हाँ जी. तो ओके, टेल मी द सोर्सेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सर फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री है ये. जी बताइए. सोर्सेज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या थी? वर्क. Sources of EU, the internal energy. सर एक तो है क्या कहते हैं वर्क है. Okay, so let me rephrase. अच्छा. Origin of internal energy. अच्छा Chemical ओरिजिन. ओके. bonds, chemical energy, और और कौन सी पड़ी थी? बॉन्ड के अंदर छुपी होती एनर्जी, पोटेंशियल और एनर्जी. एंथैल्पी. अच्छा नहीं पोटेंशियल. जब बॉन्ड जितनी भी एंथैल्पी एनर्जीज लगा. होती हैं, all the energies will be part of this. And kinetic, जो मैंने आपको बताया था, वाइब्रेशनल. So this is all the energies together constitute. अब काइनेटिक की बात करें तो तीन तरह की हमने पढ़ी थी, राइट? ट्रांसलेटरी, रोटेशनल एंड वाइब्रेटरी. तीन की तीन जो थी इसके अंदर इंक्लूडेड थी. ओके, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी? एनर्जी स्टोर्ड within a system. यस, और अ सब्सटेंस. That's a basic definition. So, yeah. And what are the how do you change, how do you do a delta U of the system? If you want to change the internal energy of the system, what are the various Heat passes methods into available or to out you? of the system. Yes, agreed. Work is Heat done. passed in or out of the system. Work done on or by the system. Work done on or by the system. Agreed. उससे भी नुकसान होगा. Or matter enters or leaves the system. Yes, work done on the system and getting converted into heat, and if the work leaves leaves the system, or Matter work तो जैसे कि गैस अगर leaves, release. ठीक है, the system. Just a quick revision of the concept. So matter enters or leaves the system. ठीक बात है. The more is the matter, more energy it stores. Right? Energy stored within a system or a substance. So more is the substance. Okay. Now, internal energy is also a state function, by the way. ठीक है. So irrespective of the process you do, irrespective of the process you take, adopt, it only depends on initial and final states of the system, not on the route or the path taken to achieve it. Okay. ठीक है ना? तो मतलब आपका जो फाइनल टेम्परेचर था और इनिशियल टेम्परेचर था, दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट. कैसे आप लेके आए उसको, किस अप्रोच से आपने इंटरनल एनर्जी को चेंज करा डिफरेंट कंडीशंस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इट ओनली डिपेंड्स ऑन
For example, if you do, you pick up a adiabatic system and you do some work on it, okay, and you could do some uh, work on it by using a spoon and mixing. So you are doing work जैसे अंडा फेंटते हैं या दूध के अंदर मिलाते हैं, राइट? और यू डू द सेम थिंग विद द हेल्प ऑफ एन यू नो इमर्शन रॉड, मतलब आप गर्म कर दो उसको गैस पे रख के या बिजली वाले इंडक्शन कुकर के ऊपर. Finally, what is happening, irrespective of the way you do this, you are finally adding only some, for example, with the manual work or the electrical work, you end up only adding the same amount of work to it, right? So temperature will go up by the same way, value, and therefore the heat which you have provided by way of work on the system raises the temperature by the same amount, and therefore, irrespective of the fact that how you did it, the delta U remains same. So delta U is not totally, not at all dependent on the process adopted. It only depends on the initial and final state of the system. किस method से करा, it doesn't matter. ठीक है. So can we say that this point is clear? Internal energy is a state function. Let me Yes, sir. just evaluate that. Okay, so it is clear to you? हाँ जी, हाँ जी. It's a state function. हाँ जी. ठीक है, टेम्परेचर जितना बदलेगा उससे डिसाइड होता है, इससे कोई फर्क नहीं और ये पड़ता कि पाथ इंडिपेंडेंट भी है ना. हाँ, एंड देयरफॉर इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, देयरफॉर ठीक. एब्सोल्युटली. Okay, this is one point. Second thing, if I ask you true or false, just think very carefully because you know the answer. Can we say that it's an extrinsic property? कैसे? Which property? Is internal energy an extensive property? What is an extrinsic property? Something that depends on the हाँ जी. quantity of the Yes, sir. It substance. is. It is. It is an extensive property. Absolutely, it So is. can we say that जितनी स्टेट फंक्शंस है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं? मतलब जितनी भी no, लाइक स्टेट no, फंक्शंस, no, no, no. ऐसे State नहीं बोल function is सकते. to do with the process तो वो achieved इंटेंसिव हो to जाते हैं. change the delta U. स्टेट फंक्शन का मतलब है कि जो भी आप प्रोसेस करते हैं डेल्टा यू का, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन मैटर करती है. तो डेल्टा यू जब होता है तब वी डिस्कस वेदर इट इज अ स्टेट फंक्शन और नॉट. बट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो इसेंशियली इज अबाउट मोर अबाउट क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस. ठीक. ठीक है ना? ओके. एंड जस्ट फॉर योर नॉलेज, this is more physics again, but uh, you as a independent, the you contained inside a system is not studied. Thermodynamics mein there is one distinction. It always deals with change, and therefore when I say the change in delta U, and U is a state function, but we are focusing, when we talk about state, we are more focused on delta U. Thermodynamics एक ऐसा topic है which only deals with the system changing its state from one place to another. So thermodynamics की जब study है तो उसमें हमारा ध्यान होना चाहिए कि there is nothing called as absolute value of internal energy of a system. ये इस समय internal energy of the system ये है. ऐसी कोई जनरली कोई पढ़ाई नहीं होती, ज्यादातर पढ़ाई का फोकस होगा we are concerned only with energy change from one state to another. So therefore delta U study, and therefore it being a state function is very important in this. Okay, it has to be a state function because we are worried only about delta U, nothing more than that. Okay.
Okay, one more point, which is learning also for you, but I've just mentioned it very casually earlier. The internal energy of a ideal gas is only dependent on temperature. Remember that. वैसे तो sources, uh, the chemical bond energy, the potential energy, the kinetic energy. But when it comes to saying, ki, okay, what is it dependent on then? Right? It depends externally on the temperature of the external of the gas. For example, it's a gas. If you increase the temperature of the gas, you are going to uh, increase the internal energy of the system. Okay? So internal energy is function of what? Temperature. So if internal energy is a function of a temperature and it depends on temperature for a gas, then tell me in which process will it remain same? Isochoric, isobaric, isothermal, adiabatic. Isobaric. Isobaric is constant pressure. क्या तो बोला आपने? In which process, thermodynamic process, will the internal energy never change? Internal So we energy नहीं. don't want delta U to, we want delta U to be 0. ठीक है. Which process? Which thermodynamics? Adiabatic, isochoric, Diabetic. isothermal, isobaric. किसमें? Obviously एक और होता है जो बाद में पढ़ेंगे. Made up Adiabatic. of all. Adiabatic is no heat added or leaving the system. Isochoric is delta V equal to 0. Delta T equal to 0. Temperature does not change. And internal energy is only dependent on temperature. If there is no change in temperature, which means the process is isothermal, no change in temperature, implies no change in U. For U to change, delta U is to happen, which means we know it's a state function, but it's only dependent on temperature. If T does not change, U will also not change. ठीक. Right? So isothermal processes will show that character. All right. Let's talk about the second concept pertaining to, okay. Okay. Now your topic of heat, which you said. Heat. Okay. Physics में, okay, before we reach heat, I think, because we're going to do law, let's talk about work done now. Okay. Physics में now we force into displacement, and also have F dot dl के अलावा, I have also told you divide and multiply this by area. You also get P dV as the work done. Okay, small work done, dW, and then you integrate both the sides into area divided by area. So this becomes small volume, and this becomes F by A is the pressure. So assuming pressure P dV, अगर P constant है तो P बाहर ले लो, but P is a variable. For example, PV 2 is equal to constant. Okay, so P is equal to constant upon V square. So this will become constant upon V square dV is equal to V minus 2 dV constant is equal to V raised to power minus 2 plus 1 minus 1 upon minus 1 by V.
ठीक है। वर्क की डेरिवेशन। हाँ मतलब एक एग्जांपल था, इफ p is constant then just take p out and say p dv v1 v2, so change in volume essentially will amount to change in work. So change is very important, but we are only doing not physics which is fdl, f dot ds नहीं पढ़ रहे हम, ये नहीं पढ़ रहे हैं। Okay, we are studying in the area of p into delta v, ये पढ़ रहे हैं। Okay, हर प्रोसेस के अंदर पी और वी का रिलेशनशिप अलग होता है, एडियाबैटिक में, आइसोथर्मल में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके आइसोकोरिक में मेन पी न्यूमेरिकल्स तमाम हाँ जी, सिलेबस में आ गया था केमिस्ट्री का। मेरे मैन व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस? और सर एक्चुअली रिडॉक्स रिएक्शन भी आ रहा है। तो इसका रेलेवेंस इससे क्या है, वर्क डन से? नहीं, मैं बता रहा था कि वो भी ओके, करना पड़ेगा ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द के। टॉपिक, सो बिसाइड्स द पॉइंट, आई वांट टू टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू दिस। मैंने सोचा आप मुझे कुछ समझा रहे हो। नहीं। एनीवे, सो we also know electrical work from your 10th standard, I square RT. And now we also understand that in chemistry, we are more focused around this work, P dV. And if there is a relationship between P and V, we will substitute the value of P in terms of V and solve it. So the integral जो भी आएगा, that will be the work done, which is essentially P delta V. That's your work done in chemistry. All right. Now let's talk about, okay, so sign of work done. Before we reach the level of laws, we have to understand internal energy, work done, TdV, and then what are the signs of delta V. So SI convention की अगर बात करें, if the work is done on the system, work done on the system, and remember just one thing, that whenever we're referring to a system, we will be generally referring to a gas compressed by this is our gas compressed by a piston. This is the easiest system we can explain you in real life. The other ones are पिस्टन। not ideal ones. So when we are compressing the gas, we're doing work on the system. So compression, ऊपर से दबा रहे हैं इस गैस को, नीचे की तरफ ला रहे हैं, तो this is your compression. So pressure, volume, work होगा क्योंकि there is a change in the volume. What is the sign of the work done in these cases when you do work on the system? पॉजिटिव होगा। Positive work. Correct. ये सब काम आने वाला है. Like you said, free expansion. Free expansion. There is a meaning, obviously, of the word free expansion, but you did say expansion. Okay. So work done by the system to expand. मतलब बाहर atmospheric pressure है, उसके against आप ऊपर जा रहे हो, but you system is doing the work. The work done is going to be नेगेटिव। negative, right? वाइस वर्सा। Yes, ऊपर vice versa हो गया compression. ठीक है। But my question to you is, in your school, have they done the derivation of all the work done in all जी the जी four processes? सर। हाँ जी सर। यस सर। Check कर लो, क्योंकि that is part of the physics and generally नहीं नहीं, not taken, but डेरिवेशन हो रखी है एनसीईआरटी में भी दे रखी किसकी? है वर्क डन। देख क्या फॉर्मूला निकला isothermal का, so we will have to do the derivations therefore. क्या फॉर्मूला निकाला उन्होंने फाइनल? वर्क डन का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, क्या कहते हैं, पी एक्सटर्नल इंटू माइनस डेल्टा वी। P external, पी एक्सटर्नल इंटू माइनस डेल्टा वी। वो तो हमने कर लिया ना, तो जनरल इक्वेशन isothermal का, that is general, right? जनरल तो ठीक है, हमने भी कर लिया कि PdV होता है. You are saying PdV, एक तो P प्रेशर delta का V. है सर, प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट। मैं बोल रहा हूँ आइसोथर्मल में कितना वर्क डन होता है, एडियाबैटिक में कितना वर्क होता है वो. लेट मी गो टू द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. आई थिंक वहीं से राज खुलेगा, क्योंकि अभी भी एनसीईआरटी इज नॉट इन अ मूड टू राइट. एग्जाम्पलर में क्वेश्चन पूछ लो और इधर गायब कर दो. तो सारी किताब और ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है कोर्स डेली बेसिस पे, कभी कुछ जुड़ जाता है, कभी कुछ हट जाता है, वो बोलते हैं रैशनलाइज्ड है.
रैशनलाइज होता क्या है वैसे? थर्मोडायनेमिक्स। हाँ जी। रैशनलाइज का मतलब क्या होता बस कोविड में हुआ था एक बार यार, रैशनलाइजेशन टाइम नहीं था तो कोर्स कम कर दिया, बट उसके बाद रैशनलाइजेशन का मुझे मतलब नहीं समझ में आया। कोर्स को इजी करना रैशनलाइजेशन होता है, क्या होता है मुझे नहीं पता। है? जे भी कैंसिल हुआ था क्या लॉकडाउन के टाइम? नहीं, डिलेड एंड कंडक्टेड। जिसने देना है दो, नहीं तो रैंक घर बैठे रहो। 2020 में ही होगा वो शायद। याद नहीं यार। ओके एक्सलेंट। है नहीं वैसे। नहीं है। नहीं है। एनीवे, so it will not come. I doubt very much if they will ask you to this level that you have to. Let's go to the first law of thermodynamics. So ये physics में आता है, मुझे नहीं लगता कोर्स में है हमारे. So we don't have to worry. Let me go to the next page. Let's concentrate on the laws now, which is what we were aiming at. Okay, but before we do that, let's understand the. Okay, एक broad overview ले लेते हैं कि जो work done को हमने बोला PdV. Okay, the work done is PdV and then we integrate it. Depending on the type of process it, you may get different values. Okay. Now, what are those different values is something you can, good to know answers are there. Isothermal के केस के अंदर क्या होता है और इसके अंदर क्या होता है? Isothermal के अंदर जो आंसर आता है, that is work done in isothermal. Okay, so isothermal process. Temperature does not change. Isothermal process is equal to nRT natural log ln, log to the base e है मतलब. It is if it is log natural log, then it is v2 by v1. Okay, so this is natural log, but generally I think natural log use, हाँ कई बार यूज होता है. log 10 में कन्वर्ट करना है इसको, तो you can also write it as 2.303 log of v2 by v1. Okay, so ये 2.303 extra आ गया. You have to put a negative sign has to be. We are not doing derivation, we're just saying depending on the type of process it was. दो ही करने हैं हमें सिर्फ. For example, in the case of isochoric, there is no dV. तो work done is P into delta V. तो isochoric में कोई काम नहीं होता. Okay. Adiabatic का जो फॉर्मूला है वर्क डन का, the work done during the adiabatic process, I think isothermal का एक क्लियर कट आता है ये वाला. Okay, wait. Let me see what was the expression for physics में है. Adiabatic process, work done PDF. The equation is, सही थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट क्या इक्विलिब्रियम में भी यूज होगा? हाँ क्या होगा? एंड वाइस वर्सा, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा. आएगा नहीं वैसे ये. आई डाउट. एन आर
तुम्हें समझ ही नहीं आएगा इसका मीनिंग क्या है। T1 minus T2 upon 1 minus gamma। ठीक है, you should forget it, अभी नहीं कर पाएंगे हम। We'll have to do physics to be able to understand what is this। Leave it। Sorry, it's T2 minus T1। Number of moles है, these are number of moles, universal gas constant, temperature, final volume, initial volume of the gas। Okay, leave it. We don't need to learn this at all. So let's go to the next one। The next concept you have to understand is the concept of heat। What do you think is heat? उष्मा। हाँ जी, उष् हीट होते ऊष्मा। हैं ओके, ठीक उष्मा है, उष्मा। ठीक है जी। ट्रांसलेशन नहीं पूछा था, मीनिंग। So if there are two systems, very basic, you have two systems, okay? System number one and the system number two. So the system number one and the system number two, if they have a temperature difference between them, this is at higher temperature and this is at lower temperature, the quantity that flows by virtue of temperature difference is called as heat। So heat is that thermodynamic physical quantity that flows by virtue of difference in temperature between the two systems। So difference between two systems, किस चीज का difference? Temperature difference results in what? Heat flow। Heat only is seen when there is a temperature difference, otherwise you cannot see heat। Okay, so a lot of people argue that that is not true because if there is a phase change, which means you do latent heat of vaporization and latent heat of fusion, the state changes, temperature does not. Agreed. You still have latent heat of vaporization, latent heat of fusion being taken out of water, for example, converting into 0 degree। So phase change में भी होता है, उस समय temperature change नहीं होता, but the more acceptable form is this। अगर phase change है तो obviously we will not use this definition। बट अगर फेस चेंज नहीं है उसके बाद हम बात करते हैं हीट की, देन इट इज बेसिकली द physical quantity that appears only when you have difference in temperature of the two systems। It could be system or surrounding। So if this is your system and this is your surrounding, okay, and if they have temperature difference, there is no adiabatic wall, heat will escape from here if it is at higher temperature। If surrounding is at higher temperature and there is no adiabatic jacket, the heat will enter this place। Both ways it is true। ठीक है। Okay, if you remember class 9, but you would not, what is molar heat capacity? Molar heat capacity, any substance needs a certain amount of heat, needs a certain amount of heat to raise its temperature, it's 1 mole by a temperature of 1 degree or 1 Kelvin। Any substance, copper, gas, for example, हम metal में क्यों जा रहे हैं? Let's talk about, because we're talking about gas typically in this chapter। Obviously, iron will have its own specific heat, ms theta, दूध गर्म हुआ, कैलोरीमेट्री वगैरह वगैरह, but molar heat capacity is this। When you have the
amount of heat required to raise its, so it can be applicable to any material. This is known as molar heat capacity. Okay, तो आपको मान लो कि you have QP heat being supplied to a body, and you know 1 mole requires Cp per degree Kelvin, not degree Kelvin, per degree, and for T K Kelvin. So if you multiply it by T, Cp into T. So this is the change in temperature. So 1 degree ke liye you needed Cp. For T degree change in temperature, you need Cp into D. But this is again per mole basis. If you multiply this by N, you will get the actual heat you used to raise the temperature of a substance having molar heat capacity of Cp. N moles were available, and you raise the temperature of the material by T Kelvin or T degrees. Difference में कोई फर्क नहीं पड़ा. Right? So Cp is equal to the heat required to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 Kelvin. One and the same thing. Matlab Cp is equal to Qp upon N into T. This is called molar, per mole per Kelvin basis. ठीक है? If the process is isobaric, which means the pressure remains constant, then the molar heat capacity is written the way I've written, Cp. There is a reason why I have written Cp, because it is a isochoric process. So your pressure has to remain constant. Right? Let's talk about the second. So you could have, so generally we deal only with two. We deal with isobaric and we deal with isochoric, which means the volume doesn't change of the substance or the system. So there we use another terminology, which is, it is molar specific heat. Yes, it is molar specific heat, but at constant volume. This is what it is. It is not Cp, it is Cv. So the heat required is N into Cv into T. T is the again temperature change. For 1 Kelvin, it was, and 1 mole, it was Cv. But you are given N moles, so N times, and then you have to change the temperature by T instead of 1. So therefore, into T times. So this is the molar heat capacity at constant volume of the same substance, which was given heat at constant pressure. So if you have a substance like a gas, and you say, I'm going to give it the heat at constant pressure, then you will give, and I will raise its temperature by T. And I have N moles of the substance. So you have N moles of the substance. And you have the same substance being exposed to heat, but this time the volume is fixed. So you will not allow free expansion at all. You will say, I am going to use an isochoric process. So volume cannot expand. Here it was allowed to expand when you supplied the heat. So here you will not allow it to expand. You will realize that you need less heat, because in this case, when you sent in the heat, it got used to raise the temperature of the gas, which is an indirect way of saying that a part of the heat was used to increase its internal energy. The second part of the heat was used to increase the volume of the gas. So that is dV. So the work done by expansion by the system is PdV. So whatever heat you supplied, partly it got utilized to increase the temperature, which means some heat appeared as the internal energy of the system change, plus the balance heat appeared as the change in the, or not the change, but work done. We will talk about one more quantity right now. So if you supply heat to a body at constant pressure, like a gas,
which is capable of expanding, you will see this utilization of the heat. But if you keep the same gas, but say I will not allow it to change its volume, then what you have taken away from it is PDV part. It can no longer exhibit any work done by the system. And therefore, all the heat you will supply will only get utilized to change its internal energy. So if you see the same substance, can exhibit, and this of course is NCP delta T. I had been writing it at T, but this is actually change in temperature, change in temperature, change in temperature. NCP delta T, whereas this is NCV delta T. Okay. Any questions in your mind as No, to no. what do we mean by two types of, sorry, molar heat capacities of a single body? ठीक है? All right. So this was, see, I've been referring most of the time, if you notice, system में gas होगी. ये तो gas है. मतलब what happens to solids and liquids is not something we're going to study here. We're only concerned about thermodynamic systems, and we will deal very little with but one rule which is essentially, if we are not doing derivation, but it does come. अभी करेंगे जब जरूरत होगी तो. That if you're a solid, liquid, or a gas, the difference between your molar heat capacity at constant pressure and constant volume is fixed. Whether you are liquid, gas, or a solid, your Cp minus Cv for any material is R. Okay, this is very important observation. Have we done derivation? We have not. Can we do it? Yes, we will. But remember this result. It is of tremendous use in physics also. Okay. Now let me just tell you. So since we're discussing heat, temperature. So whenever temperature difference happens, heat flows, and that heat gets utilized in work done, a change in internal energy. And that further depends on whether the volume was allowed to increase. If it was, then it results in what is called as a property of the material called as molar heat capacity at constant pressure. Otherwise, it becomes a molar heat capacity at constant volume. And this is if you calculate the difference between Cp minus Cv through a derivation route, this is a universal gas constant 8.31, which is used in general equation. PV is equal to nRT equation. But very importantly, now I'm going to tell you something which is about the degree of freedom. कभी सुना है degree of freedom क्या होता है? Degree of freedom. वाह, नहीं सुना होगा. क्या Okay. टर्म है वैसे? डिग्री जरूरत से ज्यादा फ्रीडम मिलने पे जेई की तैयारी रह जाती है, सिर्फ स्कूल की रह जाती है. दैट्स ऑल. डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर कम हो तो अपने आप ही जो है एफर्ट बढ़ जाता है. बोला जी हम तो अमीर ये है ही क्या? नहीं, वी आर तो नॉट वैसे रिच. ऐसा ही है, ऐसा ही डेफिनेशन होगी कुछ ऐसी? हाँ, यही है. अच्छा. डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, बिना काम करे हुए ऐसा अगर लग जाए कि वी हैव बिकम रिच, तो क्या है फिर ये? डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा है, मेहनत करके रिच बनना. डिग्री ऑफ फ्रीडम कम है, कुछ करना पड़ेगा भाई इसके लिए. If you see prosperity all around you, what's the impression you carry? What's the impression you carry? You carry that you're rich. You don't need to work. If you see poverty all around you, what do you feel? Work. I need to work. I need to get out of this. Hmm. As simple as that. Degree of freedom जो है एक बंदे के अंदर कहाँ से आती है? कहाँ बैठा हुआ, किस माहौल के अंदर है? वो माहौल उसको जो है वो डिसाइड कर देगा उसके माइंड के नेचर को. तो ऑटोमेटिकली यू विल सी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी खतरनाक होती है ऐसे. Okay, let's talk about the degree of freedom of, so let's say, it basically means when a molecule of a gas is inside a container. So there is a container you got, okay, and this is the container you got. I will not expand too much on this, just preliminary introductory.
So degree of freedom is when you have the uh, so a molecule translatory molecule can go in X, it can go in Y, it can go in Z. So we will say every molecule which is moving because of temperature, it has a random motion. Uh, any random motion can be broken down into three vectors, namely X, Y, Z. So it has a translatory motion, and that translatory motion, has XYZ component, X, Y, Z. So we will say that this molecule has 3 degrees of freedom. 3 degrees of freedom. Okay. This is one. Then let's talk about the second one. Some molecules and additionally exhibit rotational motion. So there are 2 rotational motions which are possible. Let's not get into any of that at this stage. You just need to know what it is. And then, of course, the third is, I told you, vibrational. Context obviously is that these 3 motions contribute to internal energy. All are kinetic in nature. Motion hai kuch na kuch. Vibrational motion. Okay. Now, depending on the type of gas you are, okay, the degree of freedom can be decided. So if you want to find out what is the degree of freedom of a gas, F total, it is represented by F, degree of freedom, you have to do 3 into N, where N is the atomicity of the gas. इसे लिखा होता है ना N2 डायटोमिक के लिए लिखा होता है, और मोनोएटॉमिक के लिए 1. ट्रांसलेशन सिर्फ मोनोएटॉमिक में सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन होता है, XYZ, और कुछ नहीं होता, कोई रोटेशन नहीं होती उसके अंदर. बट अगर आप बात करोगे रोटेशन के, डायटोमिक के अंदर रोटेशनल वाइब्रेशनल मोशन होता है, और रोटेशनल भी होता है, लेकिन सिस्टम ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस पार्टिकल्स पे होगी. आ गए. हाँ. सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे आ गए. हाँ, कह सकते हैं. तो 3 into, if it's a triatomic gas, for example, okay, triatomic gas, it has 3 translatory directions possible, 3 rotational possible, and 3 vibrational. तो atomicity 3 into 3. N का मतलब है whether you are monoatomic, you are diatomic, or are you a triatomic gas? It depends on who you are, will decide your degree of freedom. But point is, a lot of people will say, then, why are you telling us, you were telling us molar heat capacity, and you've introduced the topic of degree of freedom. What is the link between CP, CV, CP minus CV? Okay, we don't know the derivation, but suddenly you've introduced degree of freedom. It is because CP, CV, which is the molar heat capacity, has a direct relationship with the degree of freedom, and degree of freedom is dependent on the atomicity, which means whether you're monotonic, whether you are monoatomic, diatomic, or a triatomic gas. And if I were to write the one of the important considered rule which I told you when we wrote the expression of work done in adiabatic, वो गामा -1 लिखा था, फिर मैंने बोला छोड़ दो, रहने दो. तो गामा एक क्वांटिटी होती है which is the ratio of Cp upon Cv. I will come to degree of freedom. Okay, this is gamma. क्या सुना है कभी? कैसे? गामा गामा. गामा, हाँ, ग्रीक लेटर वर्ड. This is called as a Poisson's ratio. Poisson. पॉइजन. अरे अच्छा, Poisson. I don't know what you will सॉ. call. This is French. This means fish. Okay, so it's how do you pronounce it? Poisson. Poisson. Okay, so Poisson ratio has to be. Zoom has lost its mind. So let's enjoy. Let's enjoy this drawing. देखते हैं Zoom में कितना दम है. So Zoom टास्क मैनेजर आ जाएगा. ओ Windows not भाई, responding, crashed. वो तो उनका सर्वर ही बंद होगा सीधा. No, it's not giving up. Okay. All right. So this gamma is ratio of a gas whose molar heat capacity is being compared. Now, how does it link to the concept of degree of freedom? Okay, that is what we need to link this to. CP and CV जो है, इसके बारे में पता होना चाहिए हमें. I think you'll have to check how is the degree of freedom
5 डिग्री 7 ये तो पता चल गया 9 है ट्राई एटॉमिक में, राइट? बिकॉज ट्राई एटॉमिक हैज ऑल थ्री, 3 into 3. डाइएटॉमिक इज 3 into T. टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज नोन, सो n डाल दो 2, और अगर मोनोएटॉमिक है तो n की वैल्यू 1 डाल दो. It has only 3 degrees of freedom. So we're talking about Poisson ratio, which is another ratio, but I'm just trying to establish that CP/CV की ratio gamma है, but gamma, how does it link to the degree of freedom? Okay, so Poisson सो ratio फिश and रेशो, फिश रेशो बोल लो सिंपली. degree of freedom. I, you can't use your own words. It is known नहीं, like एक्चुअली that. मीनिंग इसका मतलब फिश है ना, पॉइसो. That I don't know. So it's called Poisson. That I've understood from you. इट मींस फिश. Generally, you will see this when we will do kinetic theory of gases and waves. There is a Laplace. वो भी Laplace, I don't know what you call it. Laplace. Spelling is LAPLAC, but साइंटिस्ट कौन क्या बोलता था मुझे पता नहीं उसका कैसे, हाउ डू प्रोनाउंस इट. लैप्लेस फ्रेंच. हाँ, फ्रेंच है. So I don't know what do you इट्स call it. नॉट लैप्लेस, इट शुड बी आई गेस लैप्ले. लाप्ले. ओके. लैप्ले. हम तो इसको मतलब मैं तो इसको 26 साल से लाप्लेस बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे तो पता नहीं क्या बोलते पीएस हैं. साइमन मार्की द लैप्ले. हाँ, यही बंदा था Laplace. He did study on this CP/CV, degrees of freedom and all that. Waves. वेव के थ्रू जब जब ट्रैवल होता है तो वेव के जो मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाते हैं, दे एग्जिबिट इलास्टिसिटी, समथिंग लाइक दिस. ओके, जस्ट वन. सो गामा and degree of freedom are related like this. Okay. I'm not too sure whether how much of this is in your course, but it's important वैसे for ये physics. पॉइसन रेशियो भी हमारे कोर्स में नहीं है. हाँ, नहीं होगी मुझे पता है. So gamma is 1/2/f. It would not be there, should not be. But anyway, हीट के बारे में बताना बहुत जरूरी है कि गैस के क्वेश्चन में हीट के बारे में पता होना चाहिए. वो फिजिक्स में आता था, सो बी इट, बट यू हैव टू नो व्हाट इट इज. मतलब करना पड़ता है ये. अरे ठीक है. We have to go through this. Okay, let's talk about the first law of thermodynamics. So what we did is लॉ. essentially mota mota agar if I have to rewind. So the temperature difference is going to result in heat transfer or flow ठीक है. between the two systems. Okay. The only exception being phase change, where the temperature does not happen and heat still flows. That is an exception to this. Then we have discussed what is Cp, what is Cv. Cp minus Cv is equal to R, irrespective of type of material you are. We also understood degree of freedom, translatory, rotational, vibrational. Formula is 3n. 3n is the formula and Poisson's ratio. Let's move to the next one. All right, let's move to the next. And this is the first law of thermodynamics. Very elementary. We have not done the zero law of thermodynamics, I think, but zeroth जीरो law भी तो बोलते हैं. करा था, यही सब तो कर रहे थे. नहीं, that is ये zero law, zeroth law. First law of thermodynamics कर रहे हैं अभी हम. वो तो मेरे ख्याल से वो फिजिक्स के फंडे हैं सारे वो. Okay, जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने डिस्कवर किया था. okay. So शायद. this is a law which is nothing but uh, analogous to law of conservation of energy. So this is nothing but some form of conservation of energy कंजर्वेशन law. ऑफ काइनेटिक, हाँ द मैकेनिकल एनर्जी वन. हाँ हाँ हाँ, वही है ये. घूम फिर के अच्छा. वर्क डन और सब कुछ ही है. तो बस यही है कि नाम थोड़ा सा बदल दिया, बाकी इट इज सेम. सो it is energy cannot be destroyed, and we know the definition of thermodynamics. A lot of energy is being studied and their interrelationships being studied. So if you say the total energy of the system will plus the surrounding, the total energy. Okay, because you don't know right now too many energies. You only know one is internal energy. Second, you have come to know is heat. One more you have come to know, which is a different format as work done. But you will learn shortly enthalpy, entropy gives free energy. So you will have आई गेस more arsenal. एंट्रोपी शायद वगैरह सेकंड लॉ के अंदर आ जाएगा. Yeah. The है ना? total energy of the universe और गिब्स आएगा remains शायद थर्ड लॉ constant. में. Okay. Yeah. The total energy of the universe
which is made up of system and surroundings. surrounding will remain unchanged. सिस्टम से निकलेगी तो Okay. सराउंडिंग में ही जाएगी. It हाँ हाँ, remains unchanged, constant or constant. unchanged, whatever you want to call it. Okay. मुझे पहले लगता था Although कांस्टेंट और अनचेंज थोड़ी अलग अलग टर्म्स लेती है, अलग कॉन्टेक्स्ट में. constant is better, अच्छा. although it may undergo transformation from one form to the other. ओके. This is the basic law. बस इतना ही. Yes. ओके. वेरी गुड, वेरी कूल. मतलब Total energy remains law of conservation and बड़ा अच्छा लॉ energy. है और ये. क्या है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर. तो न्यूटन लॉ आप से भी अगर इजी है ये तो. है, so न्यूटन के लॉ से ज्यादा the सिंपल. so du so du the change in internal energy of the system is going to happen because some part of the energy which you supplied got utilized as work done, and some part of the energy is this. So du is equal to dq plus dw represents the mathematical. I'm not getting into derivation. So this is the देखो तो है ऐसी डेरिवेशन इंसान. mathematical form of first law of thermodynamics. डेरिवेशन ऐसा नहीं है इंसर्ट. कोई डेरिवेशन नहीं इसकी, ठीक है. बस एक प्रेशर पी एक्सटर्नल वगैरह की है. Don't worry if you see this. A lot of places you will see Q is equal to heat supplied is used for increasing the internal energy plus doing the work done. Okay, so this is work done. तो कई इसको साइन कन्वेंशन के हिसाब से चेंज कर देते हैं. This is also acceptable. This is also acceptable. Okay. So some people say we for a very small change in internal energy, there is a very small change in the heat and the work done. Some people say whatever heat we supplied got partially converted into delta U and some part got converted into uh, PdV. ठीक है. सो आप अगर एक सिस्टम लेते हो और उसके अंदर हीट ऐड कर देते हो, मतलब आपने बोला कि लेट्स लुक इनटू दिस. सो यू से आई हैव अ सिस्टम, इट्स इंटरनल एनर्जी इज U1 एंड नाउ व्हाट आई डू, आई ऐड अ हीट टू इट. सो U1 प्लस Q कर दिया आपने उस सिस्टम को, तो आपका जो U2 आ गया वो ये आ गया बेसिकली. तो अब आपने जब हीट सप्लाई करी, एक स्टेप में आपने ये करा, एक और स्टेप आपने करा, यू डिड वर्क ऑल्सो, वर्क डन ऑन द सिस्टम. ठीक है, ऑन द सिस्टम. सो यू डू टू थिंग्स ऑन द सिस्टम वॉज हेयर at U1. You did two things. You added heat to it. You also did work on the system. Then what happens? That means your U2 now becomes equal to, it gets some work. So it is going to get this much work. A heat also got added, and it had an energy at this level initially to start with, right? And finally, it elevated itself to U2. So a lot of people say U2 minus U1 is equal to W plus Q, and therefore du is equal to, this is actually the heat changed or added. So some people can write it Q, I have written it as Q, but they are one and the same thing. Heat changed. dW is the work done. So I have written as W. They have written here, but it is actually dW. So du is equal to dW plus dQ लिखने का rational ये है. So this is one explanation. My energy is U1 and I'm going to add Q and I'm going to add W and elevate my level to U2. A lot of people will express themselves like this, which is also perfectly fine. So then let's come to the second one, right? This one. So what does this mean then? अगर आप, क्योंकि दोनों साइड में there is a difference ना, इसमें change in heat plus change in work is internal energy. यहाँ पे heat added is getting converted into, तो मतलब थोड़ा सा सटल सा डिफरेंस है कि अगर आप बोल दो कि वर्क डन इज इक्वल टू PdV,
right? So work done is equal to minus P dV, where so delta U will become equal to, in the same expression, if you have to write, Q minus P delta V. You can also write it like this. इसी इक्वेशन को डेल्टा यू वाली जो भी हमने ऊपर लिखी है ये बन गया माइनस पी, तो इसको इधर ले जाओ, टेक इट ऑन दिस साइड. सो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. तो ये वाली इक्वेशन बन गई सेकेंड वाली, ठीक है। राइट? मतलब इसमें सिंपल सा कॉन्टेक्स्ट ये है, माइनस साइन का मतलब है यू लॉस्ट द वर्क, राइट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंशन हियर. तो ये इक्वेशन मैंने लिखी है एक्सपेंशन की है, ठीक है। क्योंकि वर्क का साइन नेगेटिव था उससे. तो मतलब ये, इफ यू रिमेंबर एनी ऑफ दिस, यू फाइनली यू विल अंडरस्टैंड दैट whatever heat you supply gets converted into delta U and work done. So heat supplied, बाहर निकाल दोगे हीट तो टेम्परेचर गिरा दोगे, और वर्क का देखना पड़ेगा कि एक्सपेंशन हुई है कि नहीं हुई है. अगर आपने वैसे ही हीट बाहर निकाल ली लेकिन आपने वॉल्यूम वॉल्यूम चेंज नहीं करा तो आपका सिर्फ टेम्परेचर गिर जाएगा, डेल्टा यू विल गो डाउन बट नो वर्क इज इन्वॉल्व. सो पीडीवी को जीरो लिख देंगे बिकॉज देयर इज नो वर्क इन्वॉल्व. तो क्यों लिखें? ठीक है। So let's do a small exercise on the topic of first law of thermodynamics, that essentially means you give heat, it doesn't get lost, it only takes a different shape. It takes the shape of increase in internal energy, it takes the shape of work done, but Q remains Q. Even if Q escapes the system, it goes to surrounding. तो loss तो तब भी नहीं हुआ ना, there is no loss. ठीक। Okay, now let's talk about uh, a situation. So 600 and so a system moves from state A to state B, and the system is at थोड़ा एक बार state. अपना माइक रिकनेक्ट कर लो। Okay, no worries. How is it now? बेटर। Working? आ रही है बस? हाँ जी, नहीं वो एक्चुअली थोड़ा कुछ। I know. There is something wrong, I know. थोड़ा लूज हो गया वो. You're right. Okay. So a system is at some position A and is taken to B, and during that time when it is made to travel from state A to state B, okay, this is what happens. And note it, and it takes a certain process. पाथ में जाता है वो. हो सकता है पहले प्रेशर डबल कर दिया फिर हाफ कर दिया और दूसरी बार टेम्परेचर बढ़ा दिया कुछ कर दिया, तो वो पाथ है, वो प्रोसेस के अडॉप्ट करे था. बट लास्ट और फाइनल स्टेट दे दी और बोला कि जो इसके अंदर क्यू है दैट इज फाउंड टू बी प्लस 670 कैलोरीज. ठीक है। Okay, 1 calorie is taken as 4.2 joules. Okay, and then another thing that is observed is that the work done is minus 209.3 calories. Q and W. So Q and W are known to you, and therefore now your focus is to find the what? You will find the delta U of the system. कि ऐसे system में delta U कितना हुआ when it given the initial and final changes are available to you. So now you know the rule, right? Q gets used up, which is my way of doing it, in delta U plus work. So you supplied 670 to it, heat सर ये वाला 670. फॉर्मूला भी तो यूज कर सकते हैं ना, क्या कहते हैं कौन से वाला? कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस क्यू। हाँ कर सकते हैं, W प्लस Q. हाँ मतलब ये नेगेटिव वर्क दिया ही हुआ है तो ये पुट इट एज नेगेटिव है, ये इधर घूम के इधर ही आ जाएगा. ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, कर लो. Change in internal energy.
ठीक है, आ गया 14। नहीं यार, 209.3 है। अच्छा 209 है ये। 209.3। ये एक्सपेंशन वर्क है, इसलिए मैं अपने फॉर्मूले में इसको प्लस ही लेता, क्योंकि मुझे मालूम है राइट साइड पे एक्सपेंशन वर्क दिया हुआ है। साइन में तब लूंगा व्हेन आई यूज योर फॉर्मूला, अदरवाइज आई विल यूज माय फॉर्मूला, आई विल से एक्सपेंशन 209 डालता मैं, तो मेरा डेल्टा यू भी सेम आ जाता। बट यू हैव स्ट्रेट अवे पुट इट एज W plus Q, so you will have to write minus sign. ठीक है, whatever way is convenient to you. If you use this formula, my formula, then put it as मैं W थ्री नाइन्टी expansion. सेवन हाँ जी, 397.7 397 पॉइंट्स। कैसे यार? 670 में से 209, 670 है, और 209 अगर मैं इनको वैसे ही सब्ट्रैक्ट कर लूं तो यार नहीं ये 0.3 भी तो है। तो क्या हो गया? ये 4 तो वैसे ही आ गया, नहीं 6, एक तो 6 आ गया, ये 6 बन गया, 461 तो वैसे ही बन गया, 397 का क्या फंडा है? छः, मैंने यहाँ 607 ले लिया 670 की जगह। 600, 7। एक मिनट, न्यूमेरिकल में क्या दिया है? 670 है। 670 दे रखा था। हाँ, 670, प्लीज टेक 670। 7 1 6 461.7। हम्म। नहीं 460 आना चाहिए, सॉरी 460.7। जी। हाँ जी। ठीक है, 24 करना ओके, फिर। ठीक है, लेट मी गो टू द नेक्स्ट पेज, आई थिंक इसकी इंक जो है ना finished. Okay, so I will introduce you to a new term now because I think it's time you understand this also. Like a state function, there is something called as a path also. सुना है कभी? हाँ था, हाँ। Okay, so it's called a, काइनेमेटिक्स में सोचता है। no, this is path function. So work done and Q both are path functions. They are not like U, which is a state function. Both are path functions, remember that. And what does it mean exactly? Very simple. What it means is that they are decided by the path that was taken from initial to final state. हो So, सकता है क्या पाथ डिपेंडेंट? हाँ, ये path dependent ही है, yes. So, now what was a स्टेट फंक्शन इज process? पाथ इंडिपेंडेंट एंड पाथ फंक्शन इज पाथ डिपेंडेंट। हाँ, path functions के लिए जो path है is important. So, path taken, when I say path, I don't mean literally like a walking path, I mean thermodynamic path. क्या मैंने आइसोथर्मल से करा, मैंने थर्मोडायनेमिक से करा, आइसोकोरिक से करा, जो मैंने पाथ लिया एक बॉडी के प्रेशर को बदलते हुए या एक्सपेंशन करते हुए, मैंने एडियाबैटिक जैकेट लगा दी बाहर, तो अब मेरा पाथ अलग हो गया। मतलब व्हेन आई से पाथ आई मीन द थर्मोडायनेमिक। सो पाथ टेकन इज वेरी क्रूशियल। फ्रॉम वेयर टू वेयर? ऑब्वियसली फ्रॉम इनिशियल टू final. So we are talking about initial to final state is very important for W and Q. So they are path dependent, like you say. So it is very important for us to understand them. So you have to take uh,
into account when you're doing these questions, that W and Q are path dependent. So take this into account. Don't ignore this fact and start treating them as state functions. They're not at all. Heat and work both are absolutely going to depend on how the thermodynamic system changed. Okay, some simply can say how the thermodynamic system changed becomes important. It is same as saying they are path dependent. So ये आपकी इंग्लिश है, आप कैसे इसके बारे में बात कर लो, इट इज योर चॉइस, आप जो मर्जी बोल लो इसके बारे में. Okay, so when I say path dependent or a thermodynamic system, how it uh, happens or changed. So let me give you, one situation. So something happens during constant volume. If something happens during constant volume, okay, thermodynamics, do you think work is possible then? PdV हो पाएगा क्या? Zero. You can't do work in a constant volume. So it is very much clear that work is a path-dependent function. It depends on what process you adopted. ठीक है? Now, if you do another thing, you say, okay, I'm going to change the situation. How do you change the situation? You say, okay, I'm going to change it to constant pressure. If you say it is constant pressure, then PdV will happen, right? Because volume is going to change. So you will see some work happening. Yeah, work zero. Work now done. Expansion और compression से negative positive decide होता है, लेकिन constant pressure पे करा, volume तो change करा. Now let's say you do let's take, okay, I will introduce this term later, but let me introduce it very briefly. So there are certain processes like we studied I think I've told you, reversible and irreversible processes. कल बता दिया था. Infinitesimally small and slow changes to components of a system in such a way that there is no loss of energy. Okay, so a reversible process, reversible process. So the changes to the system are slow, small, yes, they are slow, small, and all of this happens without any loss of energy. When I say energy, I essentially mean nothing is moving out in the form of a heat from this system. Now, if this is so for this system, then if you know ये जो हमारे वो होते हैं हीट इंजन जो होते हैं हमारे, जो हमारे ये जो होते हैं पेट्रोल वाले इंजन जो गाड़ी चलाने के काम आते हैं, है ना? सो इनमें क्या होता है? द इट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस. ओके, क्या होता है इंजन में, क्या होता है? हाँ, मतलब इसके अंदर नो हीट इज लॉस्ट और वेस्टेड, सो द मशीन रन्स as because if you run a machine with losses of energy, right, it is no good. So the reversible process is seen in a thermal which is जब पेट्रोल को आग लगती है तो मैकेनिकल वर्क पहिए के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली, राइट? सो इट हैपेंस विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी. So I really can't say that the changes are happening really small and slow inside an engine, but I can vouch for the fact that there is no loss of energy. But ये सब ideal बातें हैं, there is a loss of energy. But you don't have to worry about the example which I gave you. Focus on the point that a process which is slow, small, done in such a way that there is no loss of energy will be characterized as a reversible process. ठीक है. Okay, so path function I hope is clear in your mind. Ki Yes. when we are taking a equation of first law of thermodynamics,
we are actually saying delta U is equal to Q plus W. ठीक. Right? But actually what's happening is that delta U is equal to Q plus W. ये तो पाथ इंडिपेंडेंट है. तुम बीच में से जैसे मर्जी ले जाओ, ये वाले हिस्से को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ले जाओ जैसे मर्जी. इसको फर्क पड़ने वाला है और इसको भी फर्क पड़ने वाला है. So these are two path dependent. These are path functions. Path functions. Within the same equation, you can see two path functions getting added, resulting in the creation of a state function, which ठीक. is very much path dependent. Independent, sorry. The state function delta U doesn't care what path you took, but बाकी दोनों तो मैटर करेगा दोनों के लिए. बाकी जो क्वेश्चंस हैं इसके, if you see the nature of questions in this, you can see कुछ नहीं है, Q U और वो दे रखा होता है और इसको आपस में गोल गोल घुमाते रहो. मतलब ये U है, ये माइनस साइन ले लो, प्लस ले लो, ऐसा करके you can easily solve any question pertaining to. You think uh, is volume a state function? Volume is a Uh, state function. No. no, because it only depends on वॉल्यूम final वॉल्यूम and है. initial value. हाँ जी. है ना? हाउ डज इट मैटर कि तुम पहले बलून को किधर ले जाते हो, फिर किधर ले जाते हो, या छोटे छोटे हिस्सों में उसको फुलाते हो, या ये करते हो? हाउ डज इट मैटर? क्या फर्क पड़ता है यार? ओके, फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, इज वर्क अ स्टेट फंक्शन? नो सॉरी, अ पाथ फंक्शन. Work. Yes. Yes, they are, because it will very much depend on uh, कैसे. अगर हम फिजिक्स की बात करें तो हम तो स्ट्रेट लाइन पाथ में जाते हैं ना सीधा, इनिशियल एंड फाइनल में. हाँ. एफ एस करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट होता है. हाँ. तो वहां पे तो ये तो पाथ हाँ, तो आ ही कितनी नहीं रहा. डिस्प्लेसमेंट है, हाउ मच डिस्प्लेसमेंट विल डिसाइड. बट पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, वो हाँ, थर्मोडायनेमिक नहीं है पाथ ना, पे वो डिपेंडेंट नहीं, मैकेनिकल वर्क है. डिस्प्लेसमेंट पे. हाँ वो ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं मैं उतनी डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल इस रास्ते से करूंगा, लेकिन है तो उतनी डिस्प्लेसमेंट ही ना. सो इट डज गिव अ इम्प्रेशन दैट मैकेनिकल वर्क इज इसेंशियली अ स्टेट फंक्शन, क्योंकि वो तो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंडेंट होता है मैकेनिकल वर्क. तो एफ डॉट एस डिस्प्लेसमेंट है ना, तो भाई फिर वो तो इनिशियल और फाइनल पे होती है. पाथ फंक्शन में तो इट शुड डिपेंड ना कि डिस्टेंस पे डिपेंडेंट हो. हम्म. अगर आप लंबा रास्ता लेके जाओगे तो मोर मोर वर्क शुड बी डन ना, लेकिन हम नहीं मानते उसको. ठीक है. तो फिजिकल वर्क की अगर हम बात करें, डज गिव एन इम्प्रेशन दैट, बट रिमेंबर, if I say that this is a certain type of work which is dependent on moving against a force, मतलब फ्रिक्शन, तो पाथ डिपेंडेंट होता ही है. जितना लंबा पाथ लोगे उतना खर्चा ज्यादा होगा, उतना लॉस हो जाएगा एनर्जी का. ठीक है. तो यस, तो योर आंसर इज, आई हैव टू आंसर्स. वन, इफ यू आर गोइंग टू टेक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, it is path dependent. If you're going to take conservative force, it is state function. ओके. ठीक है. ठीक. ये क्वेश्चन आता है मतलब पेपर में, डिस्टिंग्विश चार्ट चूट बनाने को, शायद बोल सकते हैं आपको चार्ट बनाओ. ये बेसिक बेसिक डेफिनेशन एक बार क्लियर हो जाती है तो कर ही लेते हैं बच्चे. ओके, लेट्स डू सम न्यूमेरिकल्स नाउ ऑन दिस टॉपिक. ओके. एनसीईआरटी करें. एनसीईआरटी में कुछ होना ही नहीं है. सॉल्व है. करें एनसीईआरटी के पहले. और सॉल्व कर लेते ठीक है, देखना जरा है भी सही. एडियाबैटिक वॉल, ये वो थोड़ा हैं. टर्मिनोलॉजी यस. समझ. एनसीईआरटी.
सबसे अच्छा न्यूमेरिकल मिला मुझे एनसीईआरटी में। ले, मैं जा रहा हूँ उसमें, फिजिक्स। What? एक मिनट, देयर इज सम कंफ्यूजन। एक मिनट, इन्होंने काट तो नहीं दिया ये? नहीं, चाहिए तो नहीं है। थर्मोडायनेमिक। विच चैप्टर इज इट यार? मैं तो, 5वां चैप्टर है। अच्छा। रुको, लेट मी गिव यू क्वेश्चन। बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ढूंढा मैंने। इट्स वेरी नाइस। चलो इसी के बहाने कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम्पलर का। एग्जाम्पलर। नाइस वन। सर एक ही बताओ, हम्म, एग्जाम्पलर में पूरा सिलेबस देते हैं और एनसीईआरटी में सिलेबस काटा हुआ है। एग्जैक्टली। तभी मैं सबको बोलता हूँ एग्जाम्पलर करो। डोंट डिपेंड ऑन दिस एनसीईआरटी टेक्स्ट, क्योंकि एग्जाम्पलर में कुछ नहीं बख्शा। जेई के मेंस के भी ऊपर दे रखा है उसके अंदर। ऐसे। हाँ, जेई मेन से ऊपर है ये, कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर एडवांस के हैं इसके अंदर क्वेश्चन। तो जो केमिस्ट्री में करके तो जा नहीं रहा है दिखे थे 50 मुझे, क्वेश्चन पर केमिकल चैप्टर। बॉन्डिंग में तो। हाँ नहीं, वो तो इजी थी बड़ी। बट वही लेवल है उसका भी, एडवांस का भी। मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये करना बहुत जरूरी है। इवन इफ यू डूइंग 50 क्वेश्चंस पर चैप्टर, कुछ तो कर ही लोगे तुम। जेई मेंस तो मतलब हो जाएगा आराम से। सर इमेजिन करो, अगर जी एडवांस में मेरी केमिस्ट्री पूरी सही हुई। हो सकती है। स्टार्ट स्लो ना, जस्ट डू फुल एग्जाम्पलर। थोड़ी बहुत तो मैं भी करा ही देता हूँ एग्जाम्पलर हर चैप्टर की। तो लंबे तुम्हारे स्कूल के पेपर आ जाते हैं। सर पहले का तो ई है। मैच कर दो सारे। हाँ मैच ही कर रहा है, पहले का ई है। ऐसे वो क्रॉस करके ना लाइन ड्रॉ करो ना। नहीं वाई आर यू एक्चुअली हम राइटिंग? क्रॉस करके करते नहीं, हम तो ऐसे इधर लिख देते हैं। ओके। फिर खिचड़ी से पक जाती है। वो तो पकेगी भाई। जितने कर सकते हो कर लो। फ्री एक्सपेंशन होता क्या पता है थोड़ा सा? नहीं। ओके, सो इफ यू हैव अ गैस विच यू अलाउ टू एक्सपेंड इन वैक्यूम, लीकेज हो गई जैसे वैक्यूम के अंदर, राइट? हम्म, और बहुत जल्दी गैस निकल जाती है ऐसे। अच्छा। सो इफ 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 अ थर्मोडायनेमिक टाइम हैज नो प्रोसेस,
sorry, no time, and the word written is quickly. उसमें ट्रिक ये होती है क्विकली के अंदर कि देयर इज अ no heat is can come inside or be exchanged. Adiabatic processes happen very quickly. Therefore, there is no heat transferred. No work is done. And so ये जो free expansion का concept है कि if a gas is allowed to expand into a vacuum, तो क्या है मतलब कुछ भी नहीं होगा. No heat is transferred, no work is done, no change in temperature also happens. What a situation. No no heat transferred, no work done, no change in temperature. When the gas is going to expand into vacuum, you have to allow it to expand into vacuum. Imagine nothing happens. ठीक है. इन्होंने कोई चॉइस दी है इसमें? तो बोलते हैं एंट्रोपी का मतलब ही नहीं पता. एंट्रोपी अभी ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड. लेकिन जनरली जब व्हेन यू हैव डेल्टा जी कहाँ इक्वल्स टू. पे a free expansion means delta S is zero. But ठीक है, you don't know what is entropy, so forget it. मैं तो ऐसे डेल्टा जी इक्वल्स टू क्यों लिख दिया. इंटेंसिव एक्सटेंसिव तो पता है ना, जो बच जाएगा तो हाँ. मैच कर लेना, वो मैं तो तो पता ही ऐसे है. 10th का वो एक पढ़ दिया सेकेंड, जस्ट गिव मी डेल्टा जी. 1 सेकेंड. बाकी मैच हो गए. ये कर रहा हूँ. और ये बढ़िया यार, नो वर्क इज डन. ये तो पक्का वो हो गया. डेल्टा यू इज इक्वल टू, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया ना ये तो. वर्क डन तो हुआ ही नहीं ना इसमें. फर्स्ट हाँ. लॉ में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कौन सा लॉ था? फर्स्ट फर्स्ट लॉ. लगाओ ना यार, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ये मैं. रिवर्सिबल प्रोसेस पता है. स्लो स्मॉल. जे जे. सही है. फ्री फ्री एक्सपेंशन पी. एक्सपेंशन. पी एक्सटर्नल. यस, वैक्यूम इज जीरो. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. एक के हो गया, ये नहीं मैंने पढ़ा तुक्का मैंने. मारा के. एंट्रोपी डेल्टा जी इक्वल्स टू क्यू. छोड़ दो उसको अभी, चलो गोली मारो, आगे बढ़ो. इंटेंसिव प्रॉपर्टी. सर इट वुड बी. मास डिपेंडेंट है, सब्सटेंस डिपेंडेंसी प्रेशर. है. प्रेशर. हीट, फ्री एक्सपेंशन. अच्छा, उन्होंने चॉइस ज्यादा दी है. ओ बड़े चालू है बड़े. ओके. एंट्रोपी. नो ट्रांसफर ऑफ हीट. नो ट्रांसफर ऑफ हीट मतलब, अच्छा ये तो कर लिया, ठीक है, ये भी हो गया एडियाबैटिक. खत्म. ये पता नहीं चल रहा ना कौन कौन से यूज हो गए. ए यूज हो गया. बी. ये क्या, आइसोलेटेड सिस्टम, इसका क्या आंसर है? आइसोलेटेड सिस्टम का मैंने वो डाला था, कहते हैं वो नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर. हाँ ठीक है, डी, ये भी यूज हो चुका है. मैंने कांस्टेंट आइसोथर्मल वॉल्यूम चेंज का भी निकाला. कहाँ लिखा है? ये रहा.
हाँ ठीक है, आइसोथर्मल स्टेट चेंज का मतलब है कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी यूज हो गया, दिया चॉइस में। ओके। एडियाबैटिक तो बता ही दिया, एडियाबैटिक भी यूज हो चुका है, ये भी यूज हो चुका है, ये भी यूज हो कांस्टेंट चुका है। प्रेशर यूज हो चुका है शायद, नहीं कांस्टेंट प्रेशर यूज नहीं हुआ नहीं हुआ, हाँ। आइसोबारिक, ये नहीं यूज हुआ, एंट्रोपी नहीं यूज हुआ। एंट्रोपी मैंने तुक्का मार के डेल्टा जी को क्यू कर दिया। ये हाँ, छोड़ दो इसे अभी, इस क्वेश्चन को, ये वाला डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू, डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। थारपी इंटेंसिव होगी। और एक्सटेंसिव तो दो बची ना, हाँ, बाकी सब तो हो गई। प्री एक्सपेंशन हो गया, रिवर्सिबल हो गया, ये हो गया, इसको छोड़ देते हैं हम, टेंथ को ये भी हो गया, ये भी हो गया। पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन नहीं हुआ यार। स्टेट पाथ फंक्शन फंक्शन, ए हीट इज अ पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन स्पेसिफिक क्या कहते हैं, या कौन सा स्टेट, स्टेट, इट्स अ स्टेट फंक्शन। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इंटरनल एनर्जी, एक भाई इकलौता ही तो एक मिनट, मैंने एग्जांपल इंटरनल मैंने जगह कैसे लगाया है? नहीं लगाया, अभी लगाया मैंने, फिफ्थ का नहीं दिया। आपने अच्छा ठीक। ये रहा, ये भी गया। अब दो और बच गए, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, खत्म। एक छोड़ दो, ढूंढो उनको, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव को। इंटेंसिव होना चाहिए स्पेसिफिक हीट। इंटेंसिव होती है, नहीं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मैं नहीं, मैंने एल और एम में टिक करा हुआ है ऐसे। सिस्टम साइज पे नहीं डिपेंडेंट है ना। क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं होती, जो कितना मटेरियल है उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने एल और एम करा, प्रेशर और स्पेसिफिक हीट, एल और एम, वेट, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। क्यों? इफ यू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, वोंट द प्रेशर गो अप? नहीं, हमने कल पढ़ा था ना प्रेशर का वो, डेंसिटी डिपेंडेंट था प्रेशर, डेंसिटी प्रेशर इंटेंस डिपेंडेंट था प्रेशर। तो इंटेंसिव ही तो है, हाँ ठीक है, इंटेंसिव ही तो नहीं लिखा इट है ना। डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल। नहीं पर हमने फिजिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो इंटेंसिव ही था। टाइप ऑफ मैटर है ना, हाँ इंटेंसिव, ठीक है, टाइप ऑफ मैटर। हाँ, हाँ ठीक है, यस, यस। कलर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रेशर इज डिपेंडेंट ऑन डेंसिटी, सो डेंसिटी मीन्स यही, ठीक है, अग्रीड, यस। मास इज नॉट डिपेंडेंट ऑन, मास तो किसी का भी, सबका सेम हो सकता है, मास इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, हम्म। है ना। बट जब हमने गैस का एग्जांपल दिया था ना, उसके अकॉर्डिंग हमने इंटेंसिव स्टेट करा था प्रेशर को। प्रेशर को, हम्म। हाँ वो तो ठीक है, आई एम विद यू ऑन दैट, ये ठीक है। एक्सटेंसिव का क्या एग्जांपल लिया हमने? स्पेसिफिक हीट वो मटेरियल डिपेंडेंट नहीं होती है, हर मटेरियल की, गैस की अलग होती है, भी होती है, पर और कोई वो ऑप्शन भी तो नहीं बचा। डायटोमिक ट्राइटोमिक के ऊपर डिपेंडेंट होती है। पर कोई ऑप्शन और भी नहीं है इसके अंदर, तो एंट्रोपी कर दो फिर सीधा। एक मिनट, या स्पेसिफिक हीट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी बिकॉज अच्छा। इट्स अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, चाहे आप दो
2 किलो गैस लो या 5 किलो गैस लो, उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट ही रहती है, मटेरियल की क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं है ना, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है उसकी। सो द स्पेसिफिक हीट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है सर। स्पेसिफिक हीट, इट्स इट्स एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक हीट ये भी इंटेंसिव है। और प्रेशर जो है, कल हमने पढ़ा तो था, इट इज डेंसिटी डिपेंडेंट। इट इज इंटेंसिव डेंसिटी डिपेंडेंट। E इज हेलो। इक्वल टू 1/3 रो स्क्वायर पढ़ा था ना हमने। वो भी ठीक है। एक मिनट यार, ये हीट कैपेसिटी है या हीट स्पेसिफिक हीट है, दो वर्ड होते हैं। मैं भी थोड़ा, छोड़ो। हमने क्या स्पेसिफिक हीट, नो 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 वेट, देयर आर, वी हैव नॉट डन बोथ, वी हैव डन ओनली हीट कैपेसिटी हाँ जी। व्हिच इज सीपी। सीपी हमने पढ़ा है। सीपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सीपी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज। क्योंकि आप देखो जितनी भी डायटोमिक गैसेस है ना, दे हैव सेम सीपी। जितनी भी ट्राइएटॉमिक गैसेस हैं, दे हैव सेम सीपी। तो सीपी बेसिकली इज एक्सटेंसिव ठीक है। ओके। भाई, बिकॉज इट इज, किसी भी मटेरियल का एक मोल लो, अगर उसको 1 डिग्री टेम्परेचर से बढ़ाना है तो उतनी हीट चाहिए। तो वो सारी मोनोएटॉमिक, डायटोमिक और ट्राइएटॉमिक का सेम है, चाहे वो अलग अलग गैसेस है। ठीक है। सो हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव। ओके, तो मैंने वही तो करा है, एक्सटेंसिव ही करा है। नहीं। एक्सटेंसिव। हाँ। ठीक है। ओके। एक्चुअली और कुछ? कंफ्यूजन ये हो गया कि बाय द वे इंथैल्पी और एंट्रोपी जो हम बाद में पढ़ेंगे, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द एंट्रोपी का तो हमने पढ़ा नहीं ना अभी। नहीं, एंट्रोपी हाँ, नहीं पढ़ा हमने, ठीक है। वो तो एंट्रोपी सेकंड लॉ छोड़ के अंदर देते आ हैं। जाएगा। हाँ ठीक है, एंट्रोपी अभी हम छोड़ देते हैं, एंट्रोपी को हम फिर बाद में स्टडी करेंगे। टेम्परेचर इज इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, कोई चॉइस है टेम्परेचर? नहीं है। बट टेम्परेचर इज ओनली डिपेंडेंट ऑन, एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव। नहीं वाइड, क्यों इज टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑन मास? नोप। फिर मास इंडिपेंडेंट है। आपका टेम्परेचर 10 डिग्री है ना, मास से क्या लेना देना है इसका? सो टेम्परेचर इज ऑल्सो इंटेंसिव। इंटेंसिव। ओके। ओके। जो इंटरनल एनर्जी है वो एक्सटेंसिव थी, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिकॉज ठीक। इंटरनल एनर्जी विल डिपेंड ऑन हाउ मच मटेरियल इज अवेलेबल। तो जो आगे हमने पढ़नी है एंथैल्पी और एंट्रोपी, वो इंटरनल एनर्जी की लाइन पे ही है। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, ऑल थ्री आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। So we won't be able to match at this stage unless we understand them clearly. ठीक है? So let's continue this discussion tomorrow. We will do numerical practice tomorrow on this topic. I think एक हमने qualitative question करा है चेक करने के लिए, more conceptual, कि हमें याद भी है कि नहीं है. Then we will do some numerical practice on the first law of thermodynamics tomorrow. सर वैसे तो 15-20 क्वेश्चन एनसीईआरटी बनते के हैं। अंदर जो हमारे भी यूटी में जो आ रहा है, हाँ वो आता है हेस लॉ के न्यूमेरिकल्स है, हेसिस लॉ और हाँ, कर लेंगे, चिंता मत करो, पहुंचने वाले हैं हम। नथिंग टू वरी। एंड फिर हम थर्मोडायनामिक्स खत्म होने का वो शुरू करना पड़ेगा, हाँ हाँ, डोंट वरी सर, रिडॉक्स। बहुत डिटेल में हमें वो भी आ रहा है। हाँ। अच्छा, बहुत यार, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीड नहीं है तुम्हारे स्कूल की। पढ़ा क्या रहे हैं, आता तो कुछ है नहीं, मतलब एम ही फालतू में खाली पीली स्पीड ही स्पीड है बस। वो रिडॉक्स तो छोटा चैप्टर है। है तो, लेकिन नोट्स मिले क्या वो
असाइनमेंट्स असाइनमेंट अभी नहीं मिले। ठीक है, कीप अ वॉच ऑन देम। हाँ जी, हमारा पर्पस प्रैक्टिस करना है, हम कहीं से भी कर लें, असाइनमेंट से भी कर सकते हैं। ठीक है। आई एम सेंडिंग यू द असाइनमेंट ऑफ रोटेशनल मोशन नाउ। ठीक है, ठीक। प्लीज डू इट, इट्स अ टफ टॉपिक, 90% of your class is going to fall off their face. ठीक है सर। Be careful on that chapter. ये ओके। तो इजी पार्ट है बड़ा।